Hello. Welcome to a Gadgetwala live session. And people who've been following me on social media, मेरे Instagram पे आपको पता चल गया होगा, Gadgetwala मेरा handle है, that I was driving the Maruti Suzuki Vitara Brezza yesterday, and I thought, of course, the car has launched लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं उसको, and I finally got my hands on it because I've been traveling like mad. And so I thought let's quickly do a Q&A session with you guys because so many of you have been asking me about the Vitara Brezza. So I thought, hey, what better way to address all questions than to do a live? Woo-hoo. You can see the very stylishly photographed Maruti Suzuki Vitara Brezza up here on the wallpaper. Hello Karthik, hey Sandeep, hey Priyansh, hi Jalal, Abhishek. Lamborghini Huracan went back. Yes, Abhishek. उसे यहाँ पे रखना मतलब खतरा मोल लेना हो सकता है because anyone can come and just like wash their hands and scrape it off, and that would totally kill me. So yeah, I'm going to start with a few questions जो Instagram, Twitter और Facebook पे लोगों ने already पूछे हैं. And if you have any questions about the Maruti Suzuki Vitara Brezza, which is Maruti's latest compact SUV under 4 meters, then by all means यहाँ पे comment section में लिखिएगा, and I'm going to try and address all of them. What's new in Maruti Kavita? I just said they've got a brand new compact SUV. What about Mahindra XUV 500 W10? Muska, Aman Srivastav, really like that machine. Okay, people are already giving their comments here. Swapnil Ambulkar saying Brezza is worthy. Hello Kusumji. Hey Deepak, good morning. Alright, so on Instagram, Rishikesh Kulkarni asks, how's the support for Apple CarPlay? So just like the Baleno, Maruti Suzuki Vitara Brezza is also a car जिसमें Apple CarPlay, which is अगर आपके पास Apple iPhone है, you plug it up with the USB cable, the lightning cable, and Apple CarPlay आ जाता है in the car infotainment system. It's quite nice because आपके जो basic functions हैं Apple iPhone के, उसे वो mirror करता है. It's a very cool function. In fact, if you go to my YouTube channel, just YouTube पे जाके gadget वाला लिखिएगा, you'll see a video on how Apple CarPlay works in Maruti Suzuki Baleno. So it's a very cool feature, and especially for iPhone users, it gives you functionality like controlling your music, your playlists, and of course messaging and things like that. So आपकी नजर सड़क पे रहती है and not really on the infotainment system or car dashboard system. Shubham Mahinia, i10 Grand or Swift Surf? Wow, that's a tough one, man. Very tough. My pick would be the Maruti Suzuki Swift. That's right. What is the price for the last model of Vitara? Nishant Sharma, जो ex-Delhi prices है. Let me actually just give you a glimpse of that. It starts at 6.99 lakhs. That is all ex-Delhi prices. And 9.54 lakhs is the ZDI Plus model, which is again ex-showroom New Delhi price. What is the real mileage it gives? Sheetal Kiran, I would have to spend a considerable amount of time to see real world conditions में कितना mileage मिलता है, लेकिन on paper कंपनी दावा कर रही है कि 22 किलोमीटर प्रति लीटर शहर में आपको ब्रेज़ा देगी, and about 24.3 kmpl on highways. It is of course an engine जो हमने पहले भी देखा है, the 1.3 liter 1248 cc 4 cylinder specifically जो engine है, लगभग 90 horsepower के करीब ये power generate करता है and 200 newton meters of torque. We have seen the same engine perform well in Ciaz and in Ertiga, and of course the Maruti Suzuki Swift. So it is a very trusted engine. उनके ट्यूनिंग के मुताबिक है, पावर टू वेट रेशियो के मुताबिक है कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड कंडीशंस में कितनी पावर या कितना माइलेज आपको मिलता है. बट दिस इज अ रिलायबल डीजल इंजन जो आपको अपवर्ड्स ऑफ 20 तो माइलेज दे ही देता है. So I actually want to get you guys my pros and cons because I drove the Vitara extensively yesterday. I drove from here to Lonavala, shot a little bit over there, and then drove to Pune. And I must say कि I am not impressed with the Maruti Suzuki Vitara Brezza. मैं अपने words mince बिल्कुल नहीं करना चाहता, and I will tell you why I'm not impressed. Number one, ये premium SUV, yeah, obviously it's not a premium SUV, but it does not feel like 10 lakh रुपए की वर्दी गाड़ी. Absolutely doesn't feel like that. And I'll tell you why I'm saying that. इसके पहले obviously Maruti Suzuki Baleno मैंने चलाई है, and Baleno एक प्रीमियम हैचबैक होने के नाते अपना जो
फर्ज है वो पूरी तरह निभाती है। बट इसकी जो कंपटीशन है ब्रेज़ा की, it's competing against the QV300, it's competing against the new Quanto, which is the Nuvo Sport, and of course it's competing against the BAP of this space, the current champion of this space, which is of course the Ford EcoSport. And be it NVH levels, यानी कैबिन के अंदर जितने इंजन की या रोड की आवाज आपको आती है, be it the quality of plastics inside the cabin, जो डैशबोर्ड है और जो तमाम प्लास्टिक्स इस्तेमाल हुए, be it the seat itself, सीट का जो कंफर्ट है, be it the steering, जो फीडबैक आपको मिलता है, सस्पेंशन जो एक एक बम्प आपको महसूस होता है, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मुझे I wasn't happy with the Brezza. मुझे मजा नहीं आया. And of course it's a diesel motor and 1.3 लीटर का जो इंजन है ये हमने बाकी मारुति की गाड़ियों में भी चलाया है. बट जो टर्बो लैग आपको 1500 या 2000 आरपीएम के नीचे महसूस होता है, यानी कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर में यू आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर पावर. अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं और अगर आपको ओवरटेक करना है, आई फाउंड माई सेल्फ शिफ्टिंग गियर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स constantly. I mean third gear is the only real workable gear. अगर मैं घाट चढ़ रहा हूं, यानी कोई चढ़न है वो चढ़ रहा हूं, या फिर हाईवे पे ओवरटेक वगैरह कुछ करना चाहता हूं, सो आई रियली फाउंड दिस लैकिंग इन टर्म्स ऑफ पावर. हालांकि 2500-3000 आरपीएम के बाद, विच इज व्हाई आई सेड थर्ड गियर में 2500-3000 आरपीएम के बाद दिस इंजन रियली कम्स इनटू पावर एंड अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे इजीली 140-150 की स्पीड पे मैं जा रहा था, बट समहाउ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती है आपको हाई स्पीड्स पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 140-150, बिकॉज स्टीयरिंग जो है वो बहुत ही निम्बल है. इलेक्ट्रॉनिक असिस्ट जो स्टीयरिंग्स होते हैं ये बढ़ती स्पीड के बाद और भी स्टेडी हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, सो दैट द स्लाइटेस्ट ऑफ मूवमेंट डजंट रियली पुट यू ऑफ. मुझे वो नहीं इतना मजा आया. प्लस मैं पीछे बैठा था आते वक्त पुणे से मुंबई की तरफ, एंड खड़ 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 खड़, आई मीन इट मूव्स अ लॉट. आई डिड नॉट फाइंड इट प्लांटेड इनफ, जैसे एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को होना चाहिए. बॉडी रोल थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग में जो चढ़न थी, जो घाट सेक्शन है लोनावला और खंडाला का, थोड़ा बहुत मुझे वहां पे महसूस हुआ, बट इट इज स्टिल अ स्क्वाटेड एसयूवी कंपेयर्ड टू जो नूवो स्पोर्ट है महिंद्रा की, जिसमें बहुत ज्यादा आपको बॉडी रोल महसूस होता है. बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आज की तारीख में एक ऐसा प्लेग्राउंड हो गया है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा के लिए कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मारुति टू नॉट नोटिस कंपटीशन क्या कर रहा है. फॉर एग्जांपल द TUV300 हैज अ वेरी वेरी क्लियर प्रोपोजिशन. टफ व्हीकल है, एंड ऑफ कोर्स उनके 7 सीट्स को मैं गिनूंगा नहीं, 5 सीटर है. अभी तो 100 bhp 100 हॉर्स पावर वाला वर्जन भी महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया है. सो इट इज something which is tough, can take on to any terrain, okay, and gives you that confidence. जब आप TUV300 चलाते हैं, you feel like you're driving a tank. Wait a second, this thing has just gone off. Hello, come on, wakey. I should have adjusted the screen settings before starting this. Having said that, one second, you get the Nuvo Sport, for example, जिसमें 7 लोग आसानी से बैठ सकते हैं. In fact, if you see my video, you will see Harsh Malhotra. How you doing, my friend? Long time, man. Thank you, Nishant Sharma. So the Mahindra Nuvo Sport, for example, when I drove, you saw that 7 male adults along with 1 German Shepherd dog. हम सब उसके अंदर फिट आ गए थे. तो उसमें स्पेस का प्रोपोजिशन है, एंड ऑफ कोर्स इट ड्राइव्स लाइक मस्का. थोड़ा बॉडी रोल जरूर है, बट I've driven that extensively on the highway, and I really like the way Nuvo Sport drives. Love that vehicle. So and of course Ford EcoSport, जिसके साथ मैंने हफ्ते भर की उत्तराखंड की रोड ट्रिप की थी, the 2016 Ford EcoSport, जिसमें थोड़ा ट्यून्ड अप डीजल मोटर है एंड 10 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा आपको मिलता है. सो दैट्स ऑल्सो क्लोज टू 100 हॉर्स पावर. I really enjoyed that, and I love the Ford EcoSport. उसकी स्टाइलिंग गजब है. स्पेस हालांकि 5 सीटर परफेक्ट है. एक्सक्यूज मी, बूट स्पेस थोड़ी कम लगती है, बट द बूट स्पेस ऑफ द ब्रेज़ा एट 328 लीटर्स जो डिकी है वो एक्चुअली इकोस्पोर्ट से भी कम है. सो आई वुड कंसिडर दिस ट्वाइस बिफोर टेकिंग इट फॉर अ वीकेंड रोड ट्रिप 4 दोस्तों के साथ, बिकॉज सारे बैग्स कहाँ पे समाने वाले हैं. सो सम ऑफ ऑल पार्ट्स मुझे
थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा है ये जो अटेम्प्ट है मारुति सुजुकी का विटारा ब्रेज़ा के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी में दबदबा बनाने का, बिकॉज आई फील आफ्टर यू कम टू द मार्केट after so much time, right? They've been absent from a compact SUV space for the longest time. But after taking so much time to come to the space, it does not appear to me that, you know, the Maruti Suzuki Vitara Brezza is the best option 10 लाख रुपए के अंदर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिहाज से। निशांत शर्मा, आपका जो सवाल है 10 लाख रुपए में एसयूवी रेंज में क्या बेस्ट ऑप्शन है, मैं कहूंगा अगर आपका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वक्त बिताना है, ट्रैवल करना है, then of course consider the Mahindra Nuvo Sport. Okay, it is massive और उतनी जगह 10 लाख रुपए में एक एसयूवी में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में कोई भी आपको एसयूवी नहीं देने वाली है। ओके, my second or actually my first option will still be the reigning champion of the sub 4 meter compact SUV class, and that is the Ford EcoSport. I love the way it drives, I love the styling, I love कि कैसे ये फॉर्मूला और बेहतर बनते गया है हर नए वर्जन के साथ। So the Ford EcoSport 2016 will be my pick कि 10 लाख रुपए के अंदर आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदनी है, और अगर डीजल खरीदनी है, you know, you have both the options. You have a 1 liter EcoBoost engine in the EcoSport, or you also have the diesel motor for EcoSport. I will definitely pick that over the Maruti Suzuki Vitara Brezza. All right, let's take the 16-inch tires. Tires are good. The braking is fantastic, Mohammad Zuhaib साहब, in the Vitara Brezza. थोड़ा ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव है, तो जब आप ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आई हैड ड्रिवन द नूवो स्पोर्ट रिसेंटली, जिसका ब्रेक इतना रिस्पॉन्सिव, इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, एंड सो यू नो आई पुश द पेडल रियली हार्ड, बट ऑफ कोर्स मारुति के ब्रेक्स जो होते हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव होते हैं, दे आर वेरी गुड ब्रेक्स, एंड ऑफ कोर्स यू गेट एबीएस ऑल्सो। व्हेनेवर यू गाइज आर कंसिडरिंग टू बाय the Brezza or any other car, ABS and you know, dual airbags, these are things which you should not ignore at all. Safety comes first, maza comes later. Abhishek, you're thinking about getting the Mustang V8 2016. When will it come on the road? Anybody's guess, man. June, July, hopefully. It's a great choice, अभिषेक यादव. आप खरीद लोगे तो जरूर हमें भी बुलाइएगा, हम इकट्ठे चलेंगे रोड ट्रिप पे. Finally, the answer is Brezza or EcoSport. Manish Singh, I will have to say my pick is the Ford EcoSport 2016. Maruti Suzuki Vitara Brezza might impress a few people. जिन्होंने खरीदी है, they might be happy as well with it. I am not extremely happy because I feel a little let down. I feel a little disappointed. Maruti could have really thrown everything at this, but it does not. Hello from Italy, Roberta Loriello. You're watching the video a bit late, no problem. Thanks for tuning in. What part of Italy are you tuning in from, Roberta? Diesel automatic is not available. Ashmeet, there are 6 variants of the 1.3 liter diesel engine on the Vitara Brezza, and there is no automatic. It's a 5-speed manual transmission. They are, however, working on a petrol version and also an AMT, an automatic manual transmission version. We're going to have to wait and watch for that. मारुति की बॉडी कमजोर होती है, जितेंद्र चरण. आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट इज बेस्ड ऑन. You would have to look at independent third-party crash tests and things like that to see if it is safe or not. Chetan, you have a WagonR 2010 blue-eyed boy VXI thinking to buy TUV 300 or Ertiga or Brezza. Diesel engine is of Fiat, right? Yes, absolutely correct, Chetan. Wow, that's a whole range, man, between TUV, Ertiga and Brezza. How much is your running every month? How many people are going to be primarily using the vehicle? If you can help me with that, I can probably help you with a recommendation. Why is there no diesel automatic generally on the car? Well, Pratik, Maruti doesn't believe in giving you diesel automatics. What you get, if you are looking at an AMT version, an automatic-like version, a clutchless driving experience, then of course you have the TUV 300, जिसका automatic AMT version has been selling like hot cakes. Right, till date, which is the best engine you've driven? Wow, Mohammad Zuhaib, that is, I mean, it won't be fair because I've driven everything from the Lamborghini Huracan to the Mercedes C63 to the Range Rover SVR to an engine that is really close to my heart is, of course, what is on the Jaguar F-Type R and also the Range Rover SVR 5 liter crazy 550 horsepower engine.
the way it sounds, and there's also this crazy exhaust note that it produces, जो silencer से आवाज आती है, दिमाग खराब कर देती है आपका दिमाग. Alright, Brandon Shirley, are you kidding me, bro? Open shirt? Absolutely not. What kind of a platform do you think this is? मैंने in fact एक और button लगा दिया है, so you don't get very excited. What about BRV? Nabil Sheikh, I haven't got my hands on the Honda BRV yet, and I'm really looking forward to it because it looks like a very exciting option. Thank you for the review, Varun. Anytime, brother, anytime. Yeah. Alright, so this was a quick, 101 on the things that I really don't like, the things that I like. Okay, what do I like about the Brezza? It looks interesting, खास करके जो red with black roof spoiler, जो color options hai. They've come up with cool and very, very curious color options, so that's pretty amazing. It is a Maruti, so पूरा भरोसा है, amazing distribution है, amazing servicing है, बढ़िया resale value मिलने वाली है. So these things तो आप आंखें बंद करके मारुति के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, right? Being the biggest automaker in the country, these things are a given. But like I said, as a package, it did not really impress me much. I didn't really like the ride quality. It's got a lot of space inside. It's fantastic for 4 to 5 people who want to travel and all of that. It's a good family car. But I would rather, if I was to spend, I'd rather spend money on a Baleno if I'm looking for a car-like experience, because this feels just like a car. It's a front-wheel drive. It's not a 4x4, even though it's a compact SUV. But if I want to go for a more SUV-like, I would rather spend my money on the Ford EcoSport or the TUV 300. Yes, it shifts gear very easily. जो gear ratios हैं वो बढ़िया है. बिल्कुल Swift की तरह ही आप जो gear shift experience है. It's fantastic and the gearbox is beautiful. Thank you, Samir. Thank you so much. Manish, you want it for your dad. Can you tell me Novo Sport automatic of manual, which is better option? Well, automatic is great if our parents want to drive a lot and they want to spend a lot of time on the highway. But I somehow trust manual gear shifting a lot more than automatic, especially when you want to maneuver and overtake and do a lot of these things on the highway. The Novo Sport has a fantastic engine and manual really pumps it into action, and you can really redline that engine. It's quite rev happy up to about 4,000-5,000 RPM. Alright, so this is it, boys and girls. Hope you guys have a fantastic Budhwar and have a lovely, lovely, lovely day. And of course, go over to my website, www.thegadgetwala.in, on which we are putting together a bunch of interesting articles, very useful apps, tips, tricks, all of that. And as always, you should follow me on Instagram. Gadgetwala is my handle. On Snapchat, Gadgetwala is my handle. And check it out over there. I keep posting a lot of cool things. And have you been to my YouTube channel yet? It is the cools. I try and do daily vlogs. I also have a very, very hectic life. I'm trying to run a production company, a content company, and running my whole Gadgetwala operations. 24 घंटे कम पड़ जाते हैं. So if I cannot publish my daily vlogs someday, please don't kill me. And just keep the faith, man. Just keep showering your love. You guys are amazing. Have a lovely, lovely, lovely day. Love you guys. Adios, amigos.